Assalamualaikum. This is Haniya Asghar, computer science teacher from Roots International School and Colleges Asghar 11. Today I'm going to discuss about the paper pattern and exam preparation of grade 9 and 10. First of all, I will go with the understanding of exam structure. We have 50 marks paper. This is of three sections. First section is of MCQs. There are 10 MCQs and each MCQ contain 1 marks, that means 10 marks of MCQs. Then we have a subjective portion of short questions. In short questions, we have 3 sub questions. That means all 3 parts contain 6 questions each, out of which you have to attempt 4. That means total number of short questions are 18 and you have to attempt 12 questions, and the questions portion is of 24 marks. The last part of the subjective is long questions. Long questions are 3. Each contain 8 marks. You have to attempt 2 questions. That means 16 marks total. Next, let's talk about the bubble sheets. When you are filling the MCQs, you are provided with the bubble sheet. I have pasted 2 images of bubble sheet. Number 1 is the incorrect form and number 2 is the correct form. यहाँ पे आपको क्या करना है? You don't have to mark uh, 2 bubbles. You just have to mark 1 bubble, and how you have to mark it, that is mentioned here. Avoid overwriting or multiple shading. Red showing wrong marking and green showing correct marking. So the green one is the correct marking. You have to practice it like that. Next is time management strategy. Objective portion is of 15 marks. So just choose the answer wisely and don't panic. You have 15 marks for the objective. So just go with the flow. Then we have 1.45 hours for subjective. You have a lot of time for subjective, but I would definitely say that अभी से अपनी स्पीड बनाएं, बार बार प्रैक्टिस करें, जस्ट टेक अ स्टॉप वॉच और उस पर टाइमर सेट करें, अपने पेपर की प्रैक्टिस करें. यू शुड हैव ऑलमोस्ट 5 to 10 minutes at the end of the paper to review the answers. नेक्स्ट पेपर प्रेजेंटेशन, जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपके मार्क्स पे. आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दैट. ऑन द लेफ्ट साइड आई हैव पेस्टेड द पेपर प्रेजेंटेशन. ऑलमोस्ट ऐसी होनी चाहिए. राइट नीटली एंड क्लियरली, use blue black ink only, draw margins and label diagrams properly, avoid cutting and overwriting unnecessarily. So, answering techniques, start with easy questions first, right to the point, avoid unnecessary details. That means स्टूडेंट्स पैनिक कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे उनका पेपर लैग कर जाता है, जहाँ पे वो क्वेश्चन एक उनके सामने आया है और उसका आंसर नहीं आता. उस क्वेश्चन को एक दफ़ा साइड पे रखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस that are easy. Now for example, you are doing 4 questions और 4 questions में से आपको एक question नहीं आ रहा. In that case, what you have to do is just leave a space and start the next question. Don't stay on that question. That is the wastage of time. Next thing is just write to the point answer. Don't write unnecessary details. For example, if you are asked about truth tables, just write the definition of truth table and then example. That's it. No extra detail. Maintain proper question numbering proper honi chahiye. Leave proper spacing between answers, that I have already told you. All right. नेक्स्ट इज एग्ज़ाम डे एसेंशियल्स. आपके पास क्या क्या चीज़ें लाजमी होनी चाहिए. फॉर मी रोल नंबर स्लिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रोल नंबर स्लिप नहीं होगी तो एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा. देन अपनी स्टेशनरी होनी चाहिए. इफ़ वी टॉक अबाउट फिजिक्स, मैथ्स एंड कंप्यूटर, कैलकुलेटर मस्ट होना चाहिए आपके पास. एक्स्ट्रा पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर, स्केल सब अपना होना चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट बोरो इन बोर्ड एग्जाम. तो कैलकुलेटर तो मस्ट है इन कंप्यूटर पेपर. एंड द थर्ड थिंग इज
रिस्ट वॉच। वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट? कि आपको टाइम का पता लगता रहे कि आपका कितना टाइम रह गया है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। Next is before the exam. Arrive 30 minutes early, check roll number and seating arrangement, carefully read all instructions before attempting the paper. During the exam, stay calm and focused, double check your answers, ensure all questions are attempted, recheck bubble sheet and answer booklet before submission. पैनिक नहीं करना, यू डोंट हैव टू पैनिक। बहुत रिलैक्स होके अपना पेपर सॉल्व करें, जो चीज़ें आती हैं उनको सॉल्व करें, बाकी की स्पेसेस छोड़ दें। जो स्पेस आप रखेंगे उस पे एट द एंड ऑफ द पेपर जब सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे तब उन क्वेश्चंस पे आए, उनको गो थ्रू करें। आपको कहीं ना कहीं से आंसर मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से मतलब आपको पिछले क्वेश्चन में से मिल जाएगा, एमसीक्यूज में से रिकॉल कर लोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन पेपर्स एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन रिपीट होता है। Thank you so much. If you have any questions, you can ask me. You all have my number. So very best of luck for your papers. Thank you.